I have gone running and walking in F9 Park in the winters, when I lived close to it. Being able to take any form of exercise in the open in Pakistan is a luxury for many of us. But even in bright daylight, with people around, rules have to be followed. Stick to the more open areas, always be aware of footsteps behind or people within eyesight. Now that I am closer to the trails of Islamabad, the same rules apply. As they do even indoors, at gyms for example. They are slightly different than the ones followed when outside, but they apply nonetheless and are based on the principle of always being aware of those around you. Is there any place where one can be completely relaxed? For those of us who live alone, the answer is rarely ever yes. Similar thoughts come to mind when the F9 rape came to light. Shortly after the attack was reported, we were also told the assailants, after they had raped the survivor, told her that she should not have come to the park after dark. More than déjà vu, such statements reflect the Groundhog Day world we are condemned to live in. By we, I mean the women, for men seem rather pleased with this world. Umair Sheikh, the former CCPO of Lahore, lives in this very land, for he too had a problem with the decision of the mother, who got raped on the motorway, to drive home in the dark. It is as if an attack is the price a woman pays for wanting to live a life outside the home. Former Prime Minister Imran Khan, too, is an inhabitant of this same world, where he insists on questioning the clothes women wear or the public spots women journalists appear in to report a story. It is a world he attempts to explain nearly every time he gives an interview, years after he first expressed these views. And then recently, the current Human Rights Minister, Riaz Pirzada, has also provided us proof of his residency of this very world, when he explained better upbringing could help women avoid places where they can be raped. It is as if an attack is the price a woman pays for wanting to live a life outside the home. Though I wonder what all these men would say to the women who get raped inside their homes. But then, men in Pakistan tend to prefer not to admit to such events. In the world they inhabit, what happens in homes stays private. However, I digress. For the issue here is the complete inability of those around to understand violence against women and how to address it. It was no different with the F9 Park case. Aside from schooling women, the next reaction of our government apparatus is to clamp down on any dialogue or debate. And it was no different this time around when PEMRA, in its infinite wisdom, decided to ban the coverage and discussion of the case entirely. The reason? Some channels had named the survivor. Of course, there is ample space here for a quick discussion on the mess which is our media industry, where from reporter to editor to producer to dozen others who are all involved in the process of deciding what goes on air and what doesn't are incapable of understanding a rape survivor's name cannot be made public. And when it does, instead of those channels being blamed or shamed, the entire industry is penalized. And all discussion of the incident was banned. And why not? For we have only two answers to most societal problems. If the solution is being found at the level of the family, it is mostly marriage, and at the state level, it is always a blanket ban. But there was worse to come. Within days came the news of the suspects being identified, caught and killed. They were running away, we were told, and fired at the police manning a checkpost, only to be killed. But before we could even digest the news, the survivors' lawyers and rights activists told us the men had been caught and identified. They were seen behind bars, before they apparently appeared randomly at a checkpost to fire at policemen. What does one say? Worry about the survivor whose trauma cannot even be imagined? Of being attacked, of having her identity made public, having to identify first the attackers in custody and then later their dead bodies? Her lawyer, Iman Mazari Hazar, provided these details in a press conference she did after the news of the deaths in a shootout was released. Or should we also be worried about our society where we first wonder why women step out in the wrong clothes, or at the wrong time or in the wrong place? And where once an attack happens, we want quick and ready vengeance through speedy trials and public hangings? And because this cannot happen, we should settle for encounters? At the press conference by Iman Hazar and Farzana Bari,
there were more than one question from the journalists about the slow and cumbersome judicial process, implying or even saying outright that extrajudicial killing is a quick solution. It seems few of us want to understand where the ugliness in our culture, of any kind, comes from and how to address it. And for this reason, we don't want justice either. Justice not just for those who have been wronged, but also those accused of it. We think death, hangings, painful endings straight from medieval times can resolve matters. Be it the rapist of Zainab, or the motorway case, or the park incident, the least of our concerns is justice and a stronger system. Rough and ready death. That is all we want. And worse still, this time around it happened in Islamabad, where the police are Twitter-happy, anxious to show us their people-friendly persona, and boast of women officers and their swanky offices where women complaints are entertained. But the veneer was surface-thin, it seems. And perhaps it was equally thin in the case of the government also, which has maintained a worrying silence on the entire matter. The writer is a journalist. Published in Dawn, February 21, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मैं सर्दियों में F9 पार्क में दौड़ता और चहलकदमी करता रहा हूँ जब मैं उसके करीब रहता था। पाकिस्तान में खिले में किसी भी किस्म की वर्जिश करने के काबिल होना हम में से बहुत से लोगों के लिए एक ऐशो आराम है, लेकिन यहाँ तक कि रोशन दिन की रोशनी में भी लोगों के आसपास कवानीन पर अमल करना पड़ता है। ज्यादा खुली जगहों पर रहें, हमेशा पीछे के कदमों और बसारत के अंदर मौजूद लोगों से आगाह रहें। अब जब मैं इस्लामाबाद के रास्तों के करीब हूँ तो वही उसूल लागू होते हैं जैसा कि वो घर के अंदर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर जिम में वो बाहर के लोगों से कदरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो फिर भी लागू होते हैं और हमेशा अपने आसपास के लोगों से आगाह रहने के उसूल पर मबनी है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई मुकम्मल तौर पर आराम कर सकता है? हम में से जो अकेले रहते हैं, इनके लिए जवाब शाज़ और नादिर ही कभी हाँ होता है। इसी तरह के ख्यालात इस वक्त ज़हन में आते हैं जब F9 रैप का मामला मंजर आम पर आया था। हमले की इत्तला मिलने के कुछ ही देर बाद हमें यह भी बताया गया कि हमला आवरों ने, जब उन्होंने मुतासरा के साथ इसमत दुरी की थी, इससे कहा कि इसे अंधेरे के बाद पार्क में नहीं आना चाहिए था। दीजा वो से ज्यादा इस तरह के बयानात ग्राउंड हुक डे की दुनिया की अक्कासी करते हैं जिसमें हम रहने की मजम्मत करते हैं। हम से मेरा मतलब औरतों से है, क्योंकि मर्द इस दुनिया से खुश नजर आते हैं। लाहौर के साबिक CCPO उमर शेख भी इसी सरजमीन पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनने वाली मां के अंधेरे में घर जाने के फैसले से परेशानी थी। ये ऐसा है जैसे एक हमला वो कीमत है जो एक औरत घर से बाहर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश के लिए अदा करती है। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इसी दुनिया के बाशिंदे हैं, जहां वो ख्वातीन के लिबास अवामी मकामात पर ख्वातीन सहाफियों के बारे में सवाल करने पर इसरार करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी वजाहत वो तकरीबन हर बार इंटरव्यू देते वक्त करने की कोशिश करते हैं जब उन्होंने पहली बार उन ख्यालात का इजहार किया था। और फिर हाल ही में इंसानी हुकूक के मौजूदा वजीर रियाज पीरजादा ने भी हमें इस दुनिया में अपनी रहाइश का सबूत फराहम किया है, जब उन्होंने वजाहत की है कि बेहतर परवरिश से ख्वातीन को ऐसी जगहों से बचने में मदद मिल सकती है जहां उनकी इस्मत दुरी की जा सकती है। ये ऐसा है जैसे एक हमला वो कीमत है जो एक औरत घर से बाहर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश के लिए अदा करती है। हालांकि मुझे हैरत है कि ये सभी मर्द उन औरतों से क्या कहेंगे जो अपने घरों के अंदर रेप का शिकार होती हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान में मर्द इस तरह के वाकयात को कबूल न करने को तरजीह देते हैं। जिस दुनिया में वो रहते हैं, घरों में जो कुछ होता है वो निजी रहता है। ताहम मैं पीछे हट गया, क्योंकि यहाँ मसला यह है कि आसपास के लोग ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को समझने और इससे निमटने के तरीकों को समझने में मुकम्मल तौर पर नाअहल है। ये F9 पार्क केस से मुख्तलिफ नहीं था। ख्वातीन को तालीम देने के अलावा हमारे हुकूमती निज़ाम का अगला रद्द अमल किसी भी मुकालमे या बहस को रोकना है।
और इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी जब कैमरा ने अपनी लामहदूद दानिशमंदी के साथ इस केस की कवरेज और बहस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया। वजह क्या है? कुछ चैनलों ने जिंदा बच जाने वाले का नाम लिया था। यकीनन यहाँ हमारी मीडिया इंडस्ट्री की खराबी पर फौरी बहस के लिए काफ़ी जगह मौजूद है, जहाँ रिपोर्टर से लेकर एडिटर, प्रोड्यूसर तक दर्जन भर ऐसे लोग शामिल हैं जो ये फैसला करने के अमल में शामिल हैं कि क्या नश्र होता है और क्या नहीं, जो रैप मुतासरा का नाम समझने से कासिर हैं। और जब ऐसा होता है तो उन चैनलों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने या शर्मिंदा करने के बजाय पूरी सनत को सजा दी जाती है। और इस वाक़े पर तमाम बहस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर मुआशरती मसाइल के सिर्फ दो ही जवाबात हैं। अगर ख़ानदान की सतह पर इसका हल तलाश किया जा रहा है तो ये ज़्यादातर शादी है, और रियासती सतह पर यह हमेशा मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन आने वाला इससे भी बदतर था। चंद ही दिनों में मुश्तबा अफराद की शनाख्त, पकड़े जाने और हलाक होने की खबर आई। हमें बताया गया कि वो भाग रहे थे और उन्होंने एक चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस पर गोलियां चलाएं, सिर्फ मारे गए। लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर को हजम कर पाते, जिंदा बच जाने वाले के वकीलों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने हमें बताया कि इन अफराद को पकड़ लिया गया है और उनकी शनाख्त कर ली गई है। उन्हें सलाखों के पीछे देखा गया था, इससे पहले कि वो बज़ाहिर एक चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने के लिए बेतरतीब नमूदार हुए। कोई क्या कहता है? जिंदा बच जाने वाले के बारे में फिक्र करें जिसके सदमे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। हमला किए जाने, इसकी शनाख्त को आम करने, पहले हिरासत में मौजूद हमला आवरों की शनाख्त करने और फिर बाद में उनकी लाशों की शनाख्त करने के बारे में। उनके वकील ईमान मजारी हजीर ने फायरिंग के तबादले में हलाकतों की खबर सामने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तफसीलात फराहम की। हमें अपने मुआशरे के बारे में भी फिक्रमंद होना चाहिए, जहां हम सबसे पहले सोचते हैं कि ख्वातीन गलत कपड़ों में गलत वक्त पर गलत जगह पर क्यों निकलती, और जहां एक बार हमला हो जाता है तो हम फौरी ट्रायल और सरेआम फांसी के जरिए फौरी और तैयार इंतकाम चाहते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें इनकाउंटर्स का सहारा लेना चाहिए। ईमान हजर और फरजाना बारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से सुस्त और पेचीदा अदालती अमल के बारे में एक से ज़ायद सवालात किए गए, जिसका मतलब ये था कि मावराए अदालत कत्ल एक फौरी हल है। ऐसा लगता है कि हम में से बहुत कम लोग ये समझना चाहते हैं कि हमारी सकाफत में किसी भी किस्म की बदसूरती कहाँ से आती है और इससे कैसे निपटा जाए, और उसी वजह से हम इंसाफ भी नहीं चाहते। इंसाफ सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं जिनके साथ नाइंसाफी की गई है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसके मुल्जिम हैं। हम समझते हैं कि मौत, फांसी, दर्दनाक इख्तिताम हमेशा के दौर से मामलात को हल कर सकते हैं। ज़ैनब के साथ ज़्यादती का मामला हो, मोटरवे केस हो या पाक का वाक़या, हमारी सबसे कम तशवीश इंसाफ और मजबूत निज़ाम की है। सख्त और तैयार मौत। हम बस यही चाहते हैं। और इससे भी बदतर बात यह है कि इस बार ये इस्लामाबाद में हुआ, जहां पुलिस ट्विटर पर खुश है और हमें अपनी आवाम दोस्त शख्सियत दिखाने के लिए बेचैन है, और ख्वातीन अफसरान और उनके शानदार दफातर पर फख्र करते हैं जहां ख्वातीन की शिकायत को कबूल किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि लिबादा सतह पर पतला था, और शायद ये मामला हुकूमत के मामले में भी इतना ही कमज़ोर था, जिसने पूरे मामले पर तशवीशनाक खामोशी इख्तियार कर रखी है। मजमून निगार एक सहाफ़ी हैं। अखज़ शुदा बतारीख 21 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.